Now, over 200 home buyers protested outside DB Realty's offices in Mumbai. The reason? Vinod Goenka, managing director of DB Realty, had allegedly promised home buyers a June delivery in their much-delayed Dahisar project, DB Ozone. However, once again, the developer has allegedly gone back on the promise and has indefinitely postponed the delivery. DB Realty allegedly told home buyers the company is short of funds and cannot complete the project. Disha Shah caught up with the protesting home buyers. Take a look. As you can see right now, close to 3,500 buyers who have booked their flats with DB Realty's DB Ozone project in Dahisar are protesting because they allege that it's been more than 4 years they haven't got possession. What the builder is doing is, builder is continuously pushing dates and not giving one single date to hand over these possessions to them. From almost 7 years, I want to ask this question to Shahid Walwa, विनोद गोयनका, विपुल बंसल एंड मिस्टर गट्टू, आप मुझे बताओ कौन सा फ्लैट रेडी है और रहने लायक है? आप लोग टीवी में इंटरव्यू देते हैं कि ऑल आर फिनिश मोड पे है, एक बिल्डिंग भी रेडी नहीं है, एक बिल्डिंग भी रेडी नहीं है. We have been very patient with them because for the last 1.5 years we have been having monthly meetings with the CEO here, and every time he was saying that he'll give the position on March, starting from March. After March, it's just going berserk. Like every time we talk to them, they give new targets. So we have lost faith in DB Realty. I was there in the meeting with Mr. Goenka. I have raised all these questions, but Mr. Vipul Bansal simply refused to answer anything about these extra charges. Also about the possession, they are not giving any firm answers. They are saying they are short of funds. What are they waiting for? They want some buyer to hang themselves and then they will open their eyes. It's 3,000 flat we are talking about. You understand, one flat will have 5 individuals. It's 15,000, 20,000 people struggling here. And they're still sleeping. They're giving the false promises. अभी तक झोपड़ी में है हम लोग, घर का रास्ते देख रहे, रास्ता झोपड़ी में है हम लोग. मैंने 2009 में घर बुकिंग किया था मैडम. आज मैं जब से रेंट पे रह रही हूँ जोगेश्वरी में, 1 room kitchen, I am paying 50,000 rent and 2 lakhs deposit I have given. We are contemplating for national, we are contemplating for state legal commission. We are contemplating all kind of actions. So it will be a legal battle, that we are sure. But at the same time, this kind of agitation also we are going to perform. मैंने अपनी चाल की दोनों रूम बेचकर यहाँ पर फ्लैट लिखवाया है. मैंने 35,000 में अपनी दोनों रूम बेचकर यहाँ पर 2 फ्लैट लिखवाए. आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है. 7 साल से मैं अपना रेंट भी भर रही हूँ, यहाँ के स्लैब का पैसा भी भर रही हूँ. मेरी 24 लाख की लोन भी चालू है. ऐसा नहीं है कि बिल्डर के पास पैसा नहीं है. उसने बड़े प्रीमियम प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, सब जगह ऑनलाइन चल रहा है. वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स में वो हेलीकॉप्टर राइड्स दिलवाते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को जिन्होंने पैसा नहीं दिया, और हमने 90% पैसा देने के बाद हमें आज भी हमारा प्रोसेशन डेट पता नहीं है. We want our chief minister to come forward and intervene in this problem. I think only this is the last solution. In addition to legal, if chief minister comes and intervene and listen to our problems. मैडम, मैं अपनी बहू लाना चाहता हूँ, लाऊं कहाँ? रोड पे लाऊं बहू को? तो बार रिश्ता हमारा लड़के का टूट रहा है. लोग समझते क्या बात है, फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ इसमें गड़बड़ है. लेकिन मैं शादी करूँ, लाऊं कहाँ, रखूँ कहाँ? अभी 10 बाई 10 के रूम में सलम में मैं रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ. अगर बहू को लाऊं तो कहाँ रखूँ? हम जाए रोड पे सोने के लिए जाएं तो हमारे मन में सुसाइड करने का विचार आता है. ये ना मिलने से अच्छा तो जो है दुनिया छोड़ दो. ये तो मिलने से रहा, कब मिलेगा? You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.